we were discussing about the minister fire, which is available from the prenatal life. तो मिनिस्टर फायर प्रीनेटल लाइफ से मौजूद रहती है, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब से. And this minister fire is located on the DU4 or the governing vessel 4 or on the Ming chakra. ये हमारे Ming चक्रा पर पाई जाती है. And when we see the 7-year-old girls, she is having minister fire. 7 साल की बच्ची में मिनिस्टर फायर होती है. And when we see the 14-year-old girl, then we can see the arrival of the टाइन गुई. तब हम देखते हैं कि टाइन गुई का अराइवल हुआ. राइट, टाइन गुई मीन्स menstrual blood. So this we already discussed earlier. So in the human body there are 2 types of fire. Number 1, the fire from the birth, that is called prenatal fire, and the second fire is called postnatal fire. तो 2 प्रकार की अग्नि होती है हमारे शरीर में, एक तो जन्म से और दूसरा जीवन काल में उत्पन्न हुई अग्नि. So the fire present since the birth called minister fire, which is located in the kidney, and the fire who is appearing in the postnatal life, that is called emperor fire, which is in the heart. तो 2 प्रकार की अग्नि होती है, एक हमारी किडनी की अग्नि, दूसरी हार्ट की अग्नि. किडनी की फायर जन्म से मौजूद रहती है. जन्म से क्या, प्रीनेटल लाइफ से, जब जन्म नहीं हुआ तब से ही मौजूद रहती है. और एम्परर फायर की उत्पत्ति बाद में होती है. So the prenatal fire or the minister fire is since the prenatal life, and another fire coming in the postnatal life. So when we talk about this prenatal fire, this is a physiological fire which is necessary. ये फिजियोलॉजिकल फायर जो हमारे लिए जरूरी है. जैसे कि हम कहते हैं कि अग्नि तो जरूरी है, लेकिन एक अग्नि वो भी होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है. तो जो अग्नि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए उसे कहेंगे पैथोलॉजिकल फायर. पैथोलॉजिकल फायर. और जो अग्नि हमारे लिए जरूरी है इसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल फायर. फिजियोलॉजिकल फायर. सो इस प्रकार से 2 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं. व्हाट इज द सटल डिफरेंस? द सटल डिफरेंस इज दिस, दैट किडनी फायर is very subtle. Even we are telling it's without form. The minister fire is very subtle and without form, but the heart fire is with form. इसका एक फॉर्म होता है, यानी एक तो अग्नि ऐसी है जो छुपी हुई है, जो दिख नहीं रही है लेकिन काम कर रही है, और दूसरी अग्नि ऐसी है जो विजिबल है. So the minister fire located in the kidney is invisible fire, and the emperor fire is the visible fire. ये दिखने वाली अग्नि है. So we already discussed that kidney is the origin of water and fire both. किडनी जल और अग्नि दोनों को जन्म देती है. So kidney water is the source of menstrual blood. Kidney is giving both water as well as fire.
So kidney water is making the menstrual blood. किडनी वाटर से मेंस्ट्रुअल ब्लड बनता है। जैसा कि हमने समझा था पिछली क्लास में कि मेंस्ट्रुअल ब्लड एक तरह का वाटर है। So the kidney water is making the menstrual blood, but it's making the menstrual blood only when this in the presence of fire, in the presence of minister fire. तो मिनिस्टर फायर तो जरूरी है, इसके बिना तो मेंस्ट्रुअल ब्लड बन नहीं सकता। इट्स मैंडेटरी। So when the female is suffering with the deficiency of the kidney, जब भी किसी महिला को किडनी की डेफिशिएंसी हो जाए, so it's the deficiency of kidney yin as well as the kidney yang, or we can tell it's the deficiency of water as well as the fire. So the meaning of kidney deficiency, many times this kidney deficiency is the combination of the deficiency of yin and the deficiency of yang. ये दोनों की deficiency है, and when we are doing the treatment of fertility, we are improving the kidney yin as well as the kidney yang. हम दोनों की को improve करते हैं. So again, I will tell you the meaning of physiological, which is necessary, mandatory, and the meaning of pathological, which is creating the problem. Pathological. तो फिजियोलॉजी का मतलब है जो हमारे शरीर में जरूरी है, और पैथोलॉजिकल का मतलब है कि जो शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। So suppose minister fire become very high, then it will create the problem. Minister fire is decreasing very low, then it will create the problem. So minister fire is the fire like we are having cooking gas in our kitchen. हमारे किचन में पाई जाने वाली कुकिंग गैस जिसकी उपस्थिति में खाना पकता है. Like the cooking gas is responsible to cook the food. But suppose in your kitchen, if it's a very low fire, it will not able to cook anything. And if it's a very excessive fire, even you will not able to make anything. It will create some problem. So if the minister fire is decreasing too much or increasing too much, that is called pathological condition. तो पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जब चीज काम बिगाड़ना चालू कर दे तो हम कहेंगे भाई ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये तो पैथोलॉजिकल है. When the thing is start damaging something, then we are telling it, oh, it's not the physiological, but it's the pathological, right? So for example, I will give you one example. Suppose मिनिस्टर फायर इज वेरी डेफिशिएंट. अगर किसी की मिनिस्टर फायर बहुत कमजोर हो जाए, इफ द फीमेल इज हैविंग वेरी पुअर किडनी फायर, very poor kidney fire or the yang, then only the little exposure of the cold will create the coldness in the uterus. अगर अग्नि कम हो जाए और थोड़ा सा भी कोल्ड का एक्सपोजर होगा तो यूट्रस में कोल्डनेस बढ़ जाएगी. और कोल्डनेस का काम है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर में हम पानी को रखो तो बर्फ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर यूट्रस में कोल्डनेस बढ़ गई तो फिर वो ब्लॉकेज कर देगी, वो चीजों के फ्लो को रोक देगी, अटका देगी. बिकॉज yang is very much necessary, the fire is very much necessary. So if the minister fire is low, then uterus will become cold, and if it become cold uterus means no proper circulation, there is a very difficult ovulation, there will be many problems. It will lead to infertility or the painful menstruation or the low sexual desire, because for the good sexual desire the heat is mandatory.
अगर गर्मी की कमी हो जाए तो सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, राइट? सो if the minister fire is very low, it will create low libido as well as infertility. So the female are coming under the exposure of too much cold, and this cold might enter in the uterus and will also damage the minister fire. अगर कोई महिला ज्यादा कोल्ड के संपर्क में आती है तो भी उसकी मिनिस्टर फायर कम हो जाती है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. So look at this example here. So during the menstruation, during the menstruation, so during the menstruation of 1 to 5 days in the female, the yang is low. Yang is low or yang is in decreasing condition. जब महिलाओं का पीरियड स्टार्ट होता है तो उनके अंदर यांग उस समय नीचे गिर रहा होता है, with the bleeding, with the everyday. So on the day 1 they are having low yang. On the day 2 again, or low means we can tell more low, more lower yang. And the day 3, day 4 and the day 5, as we proceeding ahead, the yang is decreasing day by day. So on the 5th day, yang will be very low. So what is the tradition? As per the tradition, it has been told, when the female is under the menstruation, please preserve the yang. Preserve the yang. How to preserve the yang? Okay. So we are telling the female, okay, don't cook the food, don't touch too much cold water, don't come under the contact of too much cold things during the menstruation. तो जब महिला को मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है 5 दिन, तब कहा जाता है कि ज्यादा ठंडी चीजों के संपर्क में नहीं आना है और ज्यादा ठंडी चीजों को टच नहीं करना है. Even we are telling the females avoid the sexual intercourse during this time because this is the very time of very poor yang. But if someone is not following this, coming in the contact of cold thing, or not only in the cold, suppose living in the cold house or doing too much travel, using the unhygienic washrooms, and there also some pathogen might attack, because when you are cold, your immunity is very low. The immunity is provided by the yang. Immunity कौन देता है? Immunity is provided by the yang, and when his yang is decreasing, that time immunity is low. So traditionally it has been told, okay, the lots of work have been told for the female, don't do this, don't do that, don't do that. Okay. Purpose. The purpose is so that females should not suffer with the disease. Otherwise, if the female is getting the attack of coldness, because already yang is low, अगर उसके शरीर में कोल्डनेस का आक्रमण हो गया, then uterus will become cold. And when uterus will be cold, then there will be dysmenorrhea, painful menstruation. Dysmenorrhea means difficult menstruation. Dys means difficult. Menorrhea means menstruation. तो दर्द के साथ होने वाला menstruation, even the female will suffer with the infertility, even low libido.
So this all has been told to preserve the yang or the fire in the female. ये सब कुछ इसलिए कहा गया ताकि महिला के यांग को प्रिजर्व किया जा सके. So when we are looking the cycle, this is the cycle, day 1, day 14 and day 28. And when we talk about the yang, so yang will be very minimum on the day 1 of menstruation. तो यांग जो पहला दिन होगा उस दिन काफी कम होगा. It will be very low. We will discuss this thing just after a few slides. So let's come back to this point here. So if the minister fire is low, this is called pathological condition. इसी प्रकार से अगर मिनिस्टर फायर हाई हो जाए, if the minister fire is very high, then it will create excessive menstrual bleeding, even the infertility and the miscarriages. तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि yin yang playing a very important role during the whole menstrual period. So if the minister fire is normal, then everything is normal. अगर minister fire ठीक है तो सब कुछ ठीक है. But if the minister fire is deficient, then the deficient means this is the cold condition of the uterus. अगर minister fire कम हो गई तो क्या होगा? Painful period or the dysmenorrhea or even the endometriosis. There are some changes in the wall of uterus. गर्भाशय की दीवार में होने वाले कुछ changes. Even the infertility and the low libido. Even the infertility and low libido. तो ये सारे चेंजेस हो जाएंगे. If the minister fire is very high, then there will be heavy bleeding, infertility and the miscarriage. So we have to treat the person accordingly. हमें व्यक्ति को उसके अनुसार ट्रीट करना होगा. Now we are going to discuss the 4 phases of the menstrual cycle and we will keep on doing the comparison with the TCM. अब हम TCM से कंपैरिजन करते हुए एक और 4 phases के बारे में जानेंगे. And we also discuss various hormones and the connectivity with the yin and yang. So during the menstruation, sometimes yang is high, sometimes yang is low, sometimes yin is high, sometimes yin is low. So how can be understood the yin and yang during the menstruation? कि menstruation के समय कब yin ज्यादा होता है, कब yang ज्यादा होता है, अब हम इसकी बात करेंगे ताकि हम हर दिन का एक अलग ट्रीटमेंट प्लान कर सकें. Suppose someone is coming to you on the day 14 of the menstruation, during the ovulation time, the treatment will be different. If someone is coming to you on the day 25, the treatment will be different. तो कोई आपके पास 14वें दिन आता है, कोई 7वें दिन आता है, कोई आपके पास 28वें दिन आता है. सब दिनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा. हमें जानना होगा किस अवस्था में क्या चीज घटती है, क्या चीज बढ़ती है, क्या आखिर उस समय बॉडी की क्या कंडीशन है अंदर से.
So before proceeding to this, here it's written there is a fluctuation in the yin and yang. So here the yang decreases when the period starts. ध्यान रखिएगा, जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो यांग डिक्रीज होना चालू हो जाता है. यांग इज डिक्रीजिंग when the period starts, right? And keep on decreasing. I told you on the day 1 yang will be low, on the day 2 more low, on the day 3 more and more low. So yang will keep on decreasing day by day. So on the day 1 there will be low yang, but when it will keep on decreasing on the day 14 it will be very minimum. तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि मिनिमम यांग कब होगा, तो आप कहेंगे मिड साइकिल में. द मिड साइकिल इज द टाइम ऑफ मिनिमम यांग, मींस ड्यूरिंग द ओवुलेशन, बिफोर द ओवुलेशन. सो लेट्स सी वंस अगेन हियर. So yang is decreasing when the period start. Suppose there is a day 1. So yang is decreasing and keep on decreasing when you are reaching on the mid cycle. Sorry, mid cycle. जब आप mid cycle पर पहुंच जाते हैं, then yang is reaching at a minimum, right? ध्यान रखिएगा. एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे आप कोई व्यक्ति को मोटा होना है, मोटा है ना, be our target to nourish the ovum. Okay, so we want to nourish the ovum inside the ovary. So we need yin, because yin means growth. So that's why if we talk about the yin, अगर हम yin की बात करें, so yin is increasing when the period starts. Yin will be opposite. Okay. So on the day 1 of the period, yin will be something. On the day 2 it will be more. On the day 3 it will be more. Then more and more. On the mid cycle it will be highest. तो जैसे डे 1 होगा मेंस्ट्रुएशन का yin कम होगा, डे 2 में और ज्यादा होगा, डे 3 में और ज्यादा होगा, और 14 डे पर सबसे ज्यादा होगा. तो मतलब क्या है? मतलब ये है, लेट्स सी हियर. On the mid cycle there will be least yang and maximum yin. This is the concept we should remember. On the day 1, and suppose this is the near about day 13 or 14. So on the day 1, yang is gradually decreasing, but yin is gradually increasing. Right? So now, so when the mid cycle is over, अब mid cycle over हो गई, खत्म हो गई. When the mid cycle is over and ovulation happened, ovulation हो गया, अब क्या होगा? अब हमें बुलाना पड़ेगा कुछ खतरनाक लोगों को. खतरनाक लोगों का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन जो डंडा लेके घूमता रहता है कि किसी ने भी यूट्रस की ओर आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी. Progesterone is like a dada who is allowing no one to look with the curve eye to the uterus. So progesterone is a yang. Progesterone yang है. एस्ट्रोजन yin है. एस्ट्रोजन का काम है proliferation.
estrogen is the yin, but progesterone is the yang. So after the ovulation, we know there is a more progesterone, means more yang. Okay. So after the ovulation, now yang is increasing. ओवुलेशन के बाद अब यांग बढ़ना चालू होता है। अब मिनिमम तो पहले ही पहुंच गया, अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर मेंस्ट्रुएशन के पहले तक बढ़ता ही जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही पता चला कि भाई प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, हमने इतने डंडे चलाए, इतनी दादागिरी करी, उसका कोई फायदा तो मिला नहीं, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, फिर से यांग कम होना चालू हो जाएगा। सो यांग विल बी ऑन द पीक just before the menstruation, will be on the peak, highest. और ये होगा तभी तो सब ठीक से चलेगा। So when there is a, after the ovulation, yang should be high. If it's not the high, it means it's a problem, and it should keep on raising till the menstruation, and as soon as menstruation starts, again yang will lowering down, फिर से yang कम होना चालू हो जाएगा। So yang is reaches on its maximum level just before the period starts. And it begin to decrease rapidly as soon as the period starts. Right? So many females are feeling some discomfort feeling just before the menstruation. As soon as the bleeding will start, they start feeling comfortable. Like the many females are feeling irritability before the menstruation. Something disturbance in the mood, in the body before the menstruation. As soon as menstruation will start, now yang will decrease very rapidly. All the symptoms will disappear, and female will be feeling comfortable. But the condition, there should be right amount of bleeding. Bleeding का ठीक होना जरूरी है, right? So yang reaches its minimum level at the mid cycle. Mid cycle में yang सबसे कम होगा, right? Then it will start rising, और mid cycle के बाद ये बढ़ना चालू हो जाएगा, and it will rise very rapidly till the periods, maybe 1 or 2 days prior to the periods. Okay, तो ये yang की कहानी है। तो फिर से yang समझिए, on the day 1 of the menstruation and the day 14, yang is decreasing. Then after that, till the day, never day 27, yang is increasing. Right? So that's why, yeah, if yang is more, then only it will able to protect the fetus. अगर yang होगा, तभी ये fetus को protect कर सकेगा. So this is the story of yang. And this is the normal cycle. If this happened, then we can consider this cycle as a normal cycle.
If the female is not having these all things, then we'll consider as a abnormal cycle. Okay, now let's talk about the yin. अब हम yin की बात करते हैं. yin के साथ उल्टा होता है, just opposite. So when we talk about the yin, so yin will be as soon as the period starts. So suppose the day one of the starting of the period. So yin will be minimum. Yin will be minimum. Another day 40, it will be rising. Yin is rising. yin बढ़ रहा है, तभी तो ग्राफियन फॉलिकल में ओवम का साइज बढ़ रहा है. So on the day 1 till the day 14, yin is keep on increasing. So on the mid cycle, yin will be highest. तो मिड साइकिल में yin highest होगा, right? And after that it will decrease. अब इसके बाद ये कम होना चालू हो जाएगा and keep on decline, and when the periods, before the periods, it will keep on decline. पीरियड के पहले तो गिरता जाएगा, फिर जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा फिर बढ़ना चालू हो जाएगा. So just remember one thing, on the day of ovulation, near the time of the ovulation, or we can take on the mid cycle, this is the right term. अगर हम mid cycle बोलें, that will be the right term. So during the mid cycle, yang is minimum and yin is highest. Now, before the period, yang is maximum and yin is least. पीरियड के ठीक पहले यांग अधिकाधिक है और यिन सबसे कम है. क्या ये बात समझ में आती है आप सभी को? बात बहुत महत्वपूर्ण है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एबल टू अंडरस्टैंड? सभी को? एनी कंफ्यूजन? नो. Fine. Okay. So the question comes, ये बात आती है, a very important question. So this is the day 1. This is the day 14. And this is the day 28. So on the day 1, from the day 1, yang is decreasing. Then from the day 14, yang is increasing. Then the question is there, why? Temperature is high on the time of ovulation. हमने जाना है कि जब ओवुलेशन होता है उस समय फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री या फिर 1 डिग्री बढ़ जाता है. तो यहां तो हम बोल रहे हैं कि यांग कम हो रहा है. So why the temperature increasing? Anyone? Why the temperature is increasing during the time of ovulation? जब यांग कम हो रहा है तो ओवुलेशन के समय तो बॉडी एकदम ठंडी होना चाहिए. If yang is decreasing on the day of ovulation, body should be cold. But we are telling on the day of ovulation, female is having 1 degree higher temperature
उस दिन उसके शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। वंडरफुल रति जी, एक्सीलेंट। Because of LH hormone, LH hormone working like a young hormone LH. So LH is young, progesterone is young, estrogen is yin. So because of the LH hormone, there is a LH surge. So there will be young surge and 1 degree high just because of LH. That is a temporary solution for the ovulation. So look at this cycle. So on the day one, from the day one of the menstruation, in the TCM also there are 4 phases. As per the TCM also there are 4 phases of the menstrual cycle. So on the day one, yang start decreasing. On the day one से yang कम होना चालू हो जाता है and reaching on the minimum at the 14th day. Then yang start rising. फिर yang बढ़ना चालू होता है and it will reach on the peak before the bleeding. So this is about the yang. तो जब पहला दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का तो यांग घटना चालू हो जाता है और मिड साइकिल में मिनिमम पर पहुंचता है, फिर यांग बढ़ना चालू हो जाता है. Now let's talk about the yin. On the day one, yin will be minimum. Day one में yin minimum होगा. Then it will start increasing on the day 14 or the mid cycle. Yin will be maximum. Mid cycle में yin maximum होगा. And after that yin will start decreasing. उसके बाद yin कम होना चालू हो जाएगा. So this is normal cycle, and it should happen to run everything normal. So as per the TCM also, we can divide in the 4 phases. हम इसे 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं. The 4 phases of the menstrual cycle. So first, 2, 3, and the 4. It has been told, जैसे कि I will give an example here. जैसे कि आपने कार में पेट्रोल डाला, you put the petrol in the car. So petrol is a fuel. Now with the help of car engine, it is getting converted in the form of electricity or the energy. तो जितना एनर्जी बनेगी उतना फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा. So the petrol is a yin and the electricity will be the yang. So we are telling this is the transformation process. इसे हम कहते हैं transformation. Transformation of yin into yang. yin yang में बदल रहा है. पेट्रोल ऊर्जा में बदल रहा है. In the same way, EBC here. On the day one, there is a certain quantity of the yang. So yang is decreasing and the yin is increasing. So this is called transformation. One is converting in the another form. कि yang yin में परिवर्तित हो रहा है. So we are telling transformation of the yang to yin.
So in the first two phase, in the phase number 1 and the phase number 2, yang is converting in the yin. Yang yin में बदल रहा है. Now in the third and fourth phase, अगर हम तीसरी और चौथी अवस्था की बात करें, we talk about the third and fourth phase. Now yin is decreasing. Yin is decreasing and yang is increasing. Now we'll tell yin is converting into yang. अब हम बोलेंगे कि yin का ट्रांसफॉर्मेशन yang में हो रहा है. जैसे कि हमारा yin मतलब पेट्रोल, पेट्रोल घट रहा है तो yang यानी ऊर्जा बढ़ रही है. So they are just opposite to each other. So they are getting converted in each other. So we are telling it transformation. इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने दूध पिया और दौड़ लगाई तो आपकी मसल बन गई. तो दूध को आपने मसल में बदला. दूध यानी यिन को आपने मसल में कैसे बदला? यू हैव ड्रिंकन द मिल्क, देन यू आर रनिंग. तो आपने दूध पिया, वो यिन हो गया, और रनिंग कर रहे हो यांग हो गया. सो बिकॉज ऑफ मिल्क यू आर एबल टू रन. और आपने दौड़ा, आप दौड़ रहे हैं मतलब यांग. सो इफ यू आर रनिंग अ लॉट, then you're developing the muscle. So what happened? Yin is making the yang, yang is making the yin. This thing is happening one after another. तो यहां पर हम कहते हैं कि मिड साइकिल तक यिन बनता है यांग से और उसके बाद उल्टा चलता है. So we should remember, because this is a very clear concept given in the TCM, and we should have very clear idea for this. So here now, the few things we should remember very clearly. The menstruation has been divided in two parts. First is the follicular part. Second is luteal part. So this is the 1 to 14 day, then till the next 28 day. तो पहली अवस्था follicular है और दूसरी अवस्था luteal है. Right? So follicular phase is dominated by the estrogen hormone. Estrogen hormone. And the luteal phase is dominated by the progesterone hormone. So estrogen hormone is responsible for the growth because yin is increasing. Yin is increasing. So estrogen hormone considered as a yin hormone. Estrogen hormone को हम yin hormone consider करते हैं, and it's true. The release of the estrogen happen under the influence of FSH. Estrogen hormone का निर्माण FSH के कारण होता है. That's true. इसका निर्माण FSH के कारण होता है. Right? So the release of the estrogen happening from the ovary because of the FSH. FSH coming, making the follicle, then follicle secreting the estrogen. तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH का निर्माण किया. FSH ने ओवम बनाया और ओवम ने एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया. So the pituitary gland keep on secreting the FSH and the ovary keep on secreting the estrogen. So FSH is responsible for the secretion of estrogen. FSH जिम्मेदार है किसके निर्माण के लिए? एस्ट्रोजन के निर्माण के लिए. Right? But after the ovulation हो गया. The next stage, that is the luteal phase. And the progesterone hormone is because of the LH. LH hormone secreted by the pituitary gland
देन द कॉर्पस ल्यूटियम इज सीक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरॉन। तो ये पूरी घटना इस तरह से, फिर से समझिए। So first phase is dominated by the estrogen hormone. Second phase is dominated by the progesterone hormone. This phase is working under the influence of FSH. This phase is working under the influence of LH. Okay, both are secreted by the pituitary. तो पिट्यूटरी ने FSH बनाया और जिसके कारण एस्ट्रोजन का निर्माण हो रहा है पहली अवस्था में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH बनाया जिस कारण प्रोजेस्टेरोन का निर्माण हो रहा है दूसरी अवस्था में। So the first and second phase are under the influence of different hormone, right? So in the follicular phase, estrogen is increasing. पहली अवस्था में estrogen increase होता है because yin is increasing. So the estrogen is gradually increasing in the first phase. That's why there is a thickening of the uterine wall. इसी कारण से गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, right? And in the second phase, there is an increase of progesterone hormone, which is protecting the uterine wall, definitely doing the very systematic proliferation, but protecting the wall. So estrogen has been considered as a yin hormone. FSH has been considered as a yin hormone. Progesterone has been considered as a yang hormone, and the LH has been considered as a yang hormone. तो इसी कारण से जब LH का सर्ज होता है तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, राइट? सो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। अब हम आगे का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन नाउ।